So this morning, on speaking with Dr. Dar, decided to give more time for questions, and people have a lot of questions, and I'll give a short reflection, and then we'll open it up for questions and see where it goes. One of the things that comes to mind as a reflection is the considering the first step of the Noble Eightfold Path, right view, and of course the Buddha places a huge importance on like right view, and say the word sammaditthi is I mean, there's two aspects to it. One, of course, is ditthi, the view, but it's also ditthi in terms of, because sometimes when we say view, you want to be considering, well, what does the Buddha mean by that? Because it's also, say, like right view, right perspective, right understanding. So there's a broader basis for that. And so it's not as if it's, say, just one particular piece of information of how to see things rightly, which is another aspect of, say, sammaditthi, because it's translated as right, but that word samma doesn't, when you say right in English, it's sort of either it's right or it's wrong. And if you get it wrong, then, well, you're done for. And then if you get it right, then of course you win the prizes. But that's not really how the word samma is. It's right in terms of, and probably you all know this far better than me in terms of the roots of the language. But the word samma apparently in the time of the Buddha comes from musical theory, and so that it's right in terms of right in tune or just right. So that if something's going so, especially when you think of right view, right intention, right speech, right action, it isn't sort of an absolute right. It's a right that fits together and harmonizes with the rest of the path in order to accomplish its purpose. And of course the purpose is freedom from suffering. So to be able to be considering right view in that context of what does it mean to have a view that harmonizes with, say, our own body, speech, and action? How does it harmonize with views of the people around us, with the world that we live in, and particularly so that we don't suffer? And that's an important aspect, as opposed to defining this particular thought that you should have as a view, and then protecting it and guarding it and worrying that it's going to be tainted or sullied in some way, or so it's a because that's suffering in itself, just that kind of that protecting or worrying or propping up a particular view, like I've got right view, and that, because that in itself is suffering.
So that understanding how the Buddha approaches right view, and as we explore that, in particular, the Buddha is taking, when he defines it himself, then he gives two aspects of right view. One is on a worldly level, a conventional level, and one is on a transcendent level. And so on a worldly level, conventional level, right view, the Buddha defines right view in terms of action and the results of action. There's good, there's evil, there is that which is wholesome, that's what is unwholesome. There's the results of actions by body, speech, and mind that are wholesome and unwholesome. They have a result. You do something, it has a result. You reap the fruits of that. That is a fundamental of right view. You have this world, another world, a next world. It's like a fundamental recognition that our actions carry on. They have results. There's generosity, there's the fruits of generosity. There's virtue, there's results of virtue. There's our relationships that we have with parents, the family, friends, teachers. These are important relationships, and they have an effect. So that this is a sense of understanding the nature of karma, because oftentimes, and certainly in Thailand, and now I'm not sure what it's like here, because oftentimes you get cultural perceptions of certain concepts. So, like, say, just you say kamma, or that person, oh, I've got a lot of kamma. What it means is it's bad. You're obviously afflicted in some way, but it's really, that's a cultural interpretation rather than a Buddhist interpretation. The word kamma, all it is the verb to do. That's all it is. And so there's kamma which is skillful, there's kamma which is unskillful. The fruits of kamma arise out of what we've done by body, speech, and mind. It's actually quite simple. It has repercussions which are very far-reaching, but it's fairly straightforward. And in order, on a conventional level, a worldly level, if you haven't figured out that what you do has results, then you create problems for yourself and you create problems for others. So I'd say this is a fundamental part of right view, of sammaditthi, understanding the nature of action. On a transcendent level, level of freedom, liberation beyond the world, is very interesting how the Buddha defines right view. Because it's defined, there is dukkha, there is the cause of dukkha, there is cessation of dukkha, there is a path leading to cessation of dukkha. That's your handle for realization of the transcendent. It's very interesting because oftentimes especially when you say, like, everybody, if you've been introduced to Buddhism even a little bit, okay, the fundamental teaching of the Buddha is the Four Noble Truths, and it's easy to, okay, I got that, and
go on to the next bit. But this understanding of the Four Noble Truths is really what, when we view things from the perspective of the Four Noble Truths, so like then we have an opportunity for stepping beyond personality and identity. And because when we're viewing in terms of, say, on a conventional level, okay, there's actions, there's the results of actions, there's our relationships that we have, and that kind of props up the sense of, and quite rightly, I mean, because it props up the sense of identity, personhood. We are a person who has to take responsibility for our actions. So but in order to go beyond that, there's the sense of looking at things from experientially or phenomenologically. There is this phenomena of dukkha, an experience of dukkha, and we don't have to have a identity around it. We don't have to create a sense of I or this is mine, but it's an experience that we all experience, and we can understand its causes, its roots, its conditions that bring it into being. And we don't have to create a me around them, or me and my suffering. There is this experience of discontent, dissatisfaction. We can understand its causes. We can let them go. We can relinquish that. So, and then access the experience of freedom from suffering, freedom from dukkha, freedom from discontent, dissatisfaction. And there's a path of practice, a path of training that we can apply ourselves to, we can abide by, we can live within. Again, without creating a whole sense of me and, because that's me and my practice. That's a huge thing amongst, say, meditators, practitioners, whether it's lay people or monastics. That whole sort of me and my practice. I mean, it can get very obsessive, and the obsessive mind, the mind that is obsessed, is a mind that's suffering. So even if you're obsessed with practice, so the Buddha was extraordinarily insightful and extraordinarily compassionate to give us these tools that help us cut through the difficulties of the human condition. And so the prime foundation of that is right view. So plant the seeds of reflection this morning. लुंगपोर ने कहा कि आज एक सत्र में विवेचना थोड़ी करेंगे और फिर प्रश्नोत्तर के लिए ज़्यादा समय देंगे। तो आपने बताया कि एक विचार जो आता है कि हमारी साधना का पहला जो स्टेप है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, और उसमें पहला आर्य अष्टांगिक मार्ग का भी जो पहला अंग है सम्मा दिट्ठी का आता है, राइट व्यू, ठीक से पहचानना। उसके सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कोई एक इन्फॉर्मेशन है कि हमको ये मालूम होना चाहिए, लेकिन ये इसके कई आयाम हैं। कई बार हम सम्मा दिट्ठी को राइट व्यू जब ट्रांसलेट करते हैं ये तो सम्यक दर्शन ट्रांसलेट करते हैं, तो ये लगता है कि ये राइट है तो कुछ रॉन्ग होगा, और अगर रॉन्ग हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, राइट हो गया तो फिर बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो इसका इस सेंस में मीनिंग नहीं लेना चाहिए। ये अगर हम राइट शब्द की रूट में जाएं तो सम्मा शब्द जो है सम्मा दिट्ठी भाग में, वो सम्मा शब्द म्यूज़िक से आता है, वो संगीत से आता है, जिसका मतलब है एक अच्छी ट्यून है, ट्यून के हिसाब से वो चल रहा है, उसमें कोई हारमनी है आपस में। और कोई चीज़ इस तरह से कहना कि ये एब्सोल्यूट राइट है और दूसरा एब्सोल्यूटली रॉन्ग है, ये उचित नहीं है।
राइट व्यू उस सेंस में कहते हैं कि हमारे जो काम है, हमारे जो कर्म है, वो काया के हों, वाणी के हों या चित्त के हों, वो ऐसे हों कि वो दुख से मुक्ति दिलाएं। मुख्य बात ये है, और हमारे को दुख से मुक्ति दिलाएं और हम दूसरों के दुख का कारण ना बने। और इसके कंट्रास्ट में इसके विपरीत दूसरा ये है कि भाई हम कोई एक स्पेसिफिक व्यू रख लें, कोई एक विचारधारणा बना लें और उसी विचारधारा के हिसाब से चलना शुरू कर दें, चाहे हम फिर ये माने कि यही विचारधारा ठीक है और हम हर बार उसमें डिफाइन करते रहें, जस्टिफाई करते रहें कि ये राइट किस तरह से है और किस तरह से नहीं है। तो भंते जी बता रहे थे कि हम अगर सचमुच में भगवान की शिक्षा को गहराई से समझें तो जो राइट व्यू है, सम्मा दिट्ठी है, उसके भी दो आयाम हैं। एक कन्वेंशनल है जो सामान्य संसारिक लेवल पे है, और दूसरा ट्रांसेंडेंटल है, उस संसारिक लेवल से ऊपर उठ के है। जैसा नहीं कि संसारिक लेवल वाला कोई छोटा है, उसका उस सेंस में बहुत महत्व है। और वहाँ पे जो हमारे को सब जानते हैं कर्म सिद्धांत है, उसको उस सेंस में लेते हैं कि हम समझते हैं कि कर्म, हमारे जो कर्म हैं वो शरीर का हो, वाणी का हो, चित्त का हो, उन कर्मों का वो कुशल हो सकते हैं या कुशल हो सकते हैं, और उनका अपने हिसाब से कुशल हैं तो प्रिय उसका परिणाम आएगा, अकुशल हो तो अप्रिय परिणाम आएगा, अकुशल हो तो दुख पर बढ़ेगा, कुशल हो तो दुख घटेगा। तो उस सेंस में इसको भी एक पहली बात, महत्वपूर्ण बात कही जाती है सम्मा दिट्ठी की, कि हम कर्म सिद्धांत को ठीक से समझें। हम ये बात को ठीक से समझ जाएं कि जैसा हमारे कर्म होंगे उसी प्रकार के हमारे फल आएंगे। और ये कोई जो है सामान्यतः कई बार हम जो कहते हैं मेरे बहुत कर्म हैं, लॉट ऑफ कर्मा, तो उससे हम समझते हैं कि कर्म का मतलब है कि बुरे ही कर्म है। ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म कुशल भी हो सकते हैं या अकुशल भी हो सकते हैं। कर्म को हम कई बार एक संज्ञा के रूप में समझ लेते हैं, नाउन के रूप में, जबकि एक वर्ब है, ये एक क्रिया है। तो क्रिया का मतलब है कि जैसा करेंगे, ये करने की बात है, एक्शन की बात है, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये बात बड़ी सिंपल है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमको ये बात भी ठीक से समझ नहीं आई है तो हम अपने लिए भी दुख पैदा करेंगे और दूसरों को भी दुख पैदा करेंगे। तो ये सबसे जो सांसारिक लेवल का जो राइट व्यू है की बात है सम्मा दिट्ठी की, कि हम कर्म सिद्धांत को ठीक से समझें। फिर बंते जी ने कहा कि जो ट्रांसेंडेंटल है, जो संसार से ऊपर उठ के जो बेसिक भगवान की टीचिंग है, उसमें बहुत सटीक रूप से भगवान ने जो उसकी डेफिनेशन दी है कि सम्मा दिट्ठी क्या है, तो उनमें भगवान कहते हैं कि दुख का ज्ञान है, उसका समुदय का ज्ञान, उसके निरोध का ज्ञान और उसके मार्ग का ज्ञान। तो जो हम चार आर्य सत्य समझते हैं, उनको ठीक से समझना ही सम्मा दिट्ठी का कारण बनता है। कई बार हम समझते हैं चार आर्य सत्य तो बेसिक चीज़ें हैं, तो बिगिनर्स की बातें हैं, चलो आगे बढ़ो, लेट्स गो बियॉन्ड दैट। लेकिन हम उसको समझना चाहिए कि वही मुख्य भगवान की शिक्षा है, सारी शिक्षा का आधार वही है। तो हमको समझना चाहिए कि किस तरह से हम दुख का ज्ञान करें, उसके समुदय का ज्ञान हो, निरोध का ज्ञान हो, अनुभव हो, सब अनुभव के आधार पर ये चीज़ें हों। और इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस तरह से ठीक से समझें तो ये हमको एक अवसर देता है कि हम जो पर्सनैलिटी व्यू है, जो हमारा अहम का भाव है, मैं और मेरे का भाव है, उससे हम आगे निकल सकें। क्योंकि हम अनुभव को जान रहे हैं, दुख का अनुभव है, दुख का अनुभव करने का कारण है, दुख का कारण है, और उसको अगर हम छोड़ देंगे, उसके प्रति कारण के प्रति, तृष्णा के प्रति चिपकाव छोड़ देंगे तो दुख हट जाएगा। तो ये सारी अनुभव की बातें हैं, और इसमें मैं और मेरे का भाव जोड़ना एक हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी की बात लेते हैं, तो उससे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल लेवल बंते जी बता रहे थे, जो उसका असंसारिक समझ है समाधि की, वो ये कि हम किसी भी जो अनुभव हो उसको अनुभव ऐसा जैसा ऐसा ही जाने, उसमें भी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, अपना अहम का भाव, जो सक्का आइडेंटिटी है, वो क्रिएट ना करें। और समझें, जब हम सांसारिक लेवल पे सम्मा दिट्ठी समझते हैं तो उसमें पर्सनैलिटी का भाव आता है, क्योंकि उसमें हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने कर्म, हम उत्तरदायी हैं अपने कर्म के। अगर हम कर्म अकुशल करेंगे तो दुख होगा, कुशल करेंगे तो दुख नहीं होगा। तो वहाँ पे तो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। लेकिन जब हम इसके चार आर्य सत्य के मार्ग से समझते हैं तो वो उसका उस सेंस ऑफ आइडेंटिटी को
हम छोड़ देते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो सेंस हमारी पर्सनैलिटी व्यू है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, वही दुख का रूट कारण है। तो सामान्यतः हम यही समझते हैं ये मैं हूँ और मेरा दुख है, ये मेरे संस्कार हैं। तो जैसे ही मैं का भाव बना के रखेंगे और साधना करेंगे तो उससे दुख ही होगा, उससे दुख से मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो हमको ये बात बहुत महत्वपूर्ण समझनी चाहिए कि जो मी एंड माई प्रैक्टिस वाला जो बंधन है, ये एक तरह का बंधन है, एक ऑब्सेशन हो जाता है। और वो ऑब्सेशन बेशक साधना से ही हो जाए कि मेरे को साधना है, करनी है, और मेरे को अपने जो विकार है उनको हटाना है, तो वो भाव भी एक दुख का कारण ही होता है। जो 4 आर्य सत्य हैं उनका मूल यही है कि हम अपने जो सक्काय दिट्ठी है, जो मैं का भाव है, जो पर्सनैलिटी व्यू है, उसको किनारे कर सकें, उसको हटा सकें, और केवल जो अनुभव हो रहा है उसके आधार पे अपना मार्ग निर्धारित करें। और जैसे हम अगर वो ठीक से कर पाते हैं तो दुख का अनुभव होता है, तो हमें दुख का निरोध कारण भी मालूम पड़ जाता है। उस कारण को जब हम छोड़ देते हैं, व्हेन वी लेट गो दैट, उसको समझ लेते हैं और उसको उसका चिपकाव नहीं करते उससे, तो हमको दुख निरोध का भी अनुभव होता है। तो ये सब चीज़ें अनुभव के आधार पे हम समझ सकते हैं, और फिर उसका उस तरह के प्रक्रिया में हम सक्सेसफुल हो, उसके लिए क्या मार्ग है, कौन सा तरीका है, वो चौथा आर्य सत्य है, तो उसको भी समझ सकते हैं। तो फिर हम हर स्टेप पे विदाउट क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ मी, मैं का भाव नहीं पैदा करें, तो 4 आर्य सत्य सचमुच में पुष्ट होते हैं और हमें दुख से मुक्ति मिलती है। Okay, so open it up for questions, and it can be about anything. प्रश्नों साधना संबंधी, किसी भी बात पे, शिक्षा संबंधी, तो आप पूछ सकते हैं। On and off since 13 years or so, not regular. I have realized that I have either increased my suffering by meditating or at least not reduced it. So recently I discovered 2 flaws in my practice. One was self-view, that I am a meditator, I need to do something to purify my mind. Another identity I created of a failed meditator, 12 years and mind is not peaceful. So, and of course I also realized the goal, the tendency to set a goal, tendency to create a goal that the mind should be such and should not be such. So little bit at intellectual level I understand my mistakes, but any further guidance from you would be appreciated. Well, that's actually already a good insight and a good recognition. Again, it's that sense of understanding dukkha and paying attention to dukkha, and the habit of mind is that we create ideals, and whether it's about ourselves or what we should be, or about what we should be attaining or realizing, and it gets very heavy. Ajahn Sumedho has this wonderful saying that he used to use. Every time I think about myself, I feel depressed. And that's actually how it works. Because it's that sense of, as soon as we conceive of that kind of me, and especially when you think of something that's actually quite a noble goal, then we inevitably make it a burden, and it becomes problematic because of that carrying of the sense of self into it, and that's why that aspect of say like right view is so important, because it does give us a way in which we can view our experience, but then also have a way out,
and it's that through that recognition of, oh, this is dukkha, and usually what happens is we either justify it in some way, and our minds could be very acrobatic and quite skilled at creating justifications that are believable, but we're still suffering. And so that coming back to that experience and being able to reflect, well, what's those causal processes that are conditioning that, and how to relinquish, how to release, and it's also, I mean, there is an element of reflecting on, because on a very real level, we can't just be experiencing suffering all the time. How do we experience well-being and happiness? What are the causal roots of happiness and well-being? Because it can't be a goal that is way off in the future. If I just keep doing this practice, and sometime in the distant future I'll be happy. And one does have to pay attention to how do I experience a sense of happiness and well-being that isn't creating more problems. And that's where the fundamentals of practice are important to be seeing that quite naturally, as we like cultivating generosity, kindness, virtue and integrity. Those are all of those things, I think, the mind can really delight in, and you can actually, but oftentimes we don't direct our attention to that. We go on again. I've got to achieve this ideal, and then we miss the fact that well, actually we've been pretty good. We haven't killed anybody today. Haven't stolen anything. And that's there's lots of people who can't say that. So that it's sort of being able to recognize those fundamentals of well-being within the human condition, as well as that cultivation of a certain sense of composure and sense restraint and mindfulness. Those are, when we acknowledge it and recognize it, oh, that's worthy of well-being. Don't be, because we can be really hard on ourselves sometimes because of and it is it is a noble goal, it is a refined goal, but we also have to get there. And if we beat ourselves and are miserable the whole time, we won't make it. आपने प्रश्न पूछा कि मैं 13 वर्षों से ऑफ एंड ऑन में ध्यान करता रहता हूँ, और लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो दुख का अनुभव है वो कम तो नहीं हुआ ज़्यादा, शायद थोड़ा बहुत बढ़ ही गया हो। और जितना मुझे समझ में आया है कि उसका यही कारण था कि मैंने एक अपना आइडेंटिटी बना के रखी थी, मैं मेडिटेटर हूँ, मुझे ऐसा होना चाहिए और मन पीसफुल होना चाहिए। इतने साल हो गए, अभी भी मन मेरा शांत नहीं हुआ। तो इस तरह से गोल बनाने से दिक्कत रही। तो वो पूछते हैं क्या, किस तरह का गोल बनाएं और क्या आप और मार्गदर्शन कर सकते हैं इस बारे में। तो लुंगपोर ने जवाब दिया कि ये इसको बात को समझना ही कि आप के जो दुख में कमी नहीं हो रही वो सेल्फ व्यू के कारण है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के कारण है अपना। तो ये भी एक बहुत अच्छी इंसाइट है, और हमको इसको दुख की ओर जब जितना ध्यान देंगे उतनी ये बातें और क्लियर हो जाती हैं कि कोई एक हमारी आदत होती है एक आइडियल बनाना, एक बहुत ऊंचा लक्ष्य बनाना,
कि या कैसा हमें कैसा होना चाहिए या संसार कैसा होना चाहिए, और ये सब बातें बहुत भारी हो जाती हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है हमारे लिए, एक बाहर की तरह हो जाती हैं। आपने कहा कि जैसे अजान सुमेधो एक बात कहते हैं बहुत सटीक इस मामले में, कि जब भी मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो डिप्रेस हो जाता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं का भाव आता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये कमी है, ये पूरा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो हमको इस साधना के जो अच्छे आयाम हैं, अच्छे हमारी लक्ष्य हैं, उनको भी भार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें अपना मैं का भाव साथ लेके चलेंगे तो ये भार बन जाता है। और इसलिए हमको ये बहुत आवश्यक है कि सम्मा दिट्ठी को ठीक से समझें कि क्या, जैसे अभी प्रवचन में बंते जी ने बताया था कि किस तरह से हम अनुभव को लेते हैं और उस बात के अनुभव के आधार पर कैसे रास्ता ढूंढते हैं। और कहते हैं कि कई बार हम बात क्लियर नहीं होती तो अपने जो भी कार्य करते हैं उसको हम जस्टिफाई कर देते हैं, क्योंकि मन बहुत चालाक है, वो किसी भी अपने क्रियाकलाप का जस्टिफिकेशन बना देता है, और लेकिन दुख का अनुभव फिर भी वैसा का वैसा ही रहता है। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि हम ठीक से समझें, अन्वेषण करके कि ये जो कारण क्या है और उसका फल क्या है, जो कॉजल प्रोसेस है उसको ठीक से समझें, और कुछ इसके लिए विवेचना की आवश्यकता रहती है। और हम प्रश्न लेके चल सकते हैं किस तरह से मैं दुख से मुक्ति पा सकता हूँ, किस तरह से मैं एक कल्याणकारी जीवन रह सकता है। उसके भी कारण हैं, हर चीज़ का कारण है, कोई बगैर कारण के नहीं है। तो उसके कॉजल रूट क्या है, कहाँ पे उसकी उत्पत्ति होती है, उस बात को ठीक से समझाना चाहिए, क्योंकि दुख मुक्ति एक भविष्य का गोल नहीं हो सकता, इसी समय प्रेजेंट का गोल है कि हम दुख अनुभव कर रहे हैं, हमने उसका कारण छोड़ दिया, तो दुख से मुक्ति मन वो होनी चाहिए। तो उसको लंबे समय का गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही दुख का अनुभव हो उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको महसूस होने लगेगा कि हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम कल्टिवेट कर सकते हैं, जैसे जनरॉसिटी है, दया का भाव है, दान की आदत है, शील का पालन है, एक इंटेग्रिटी का भाव है। तो ये सब भाव अगर हम डेवलप करते हैं तो ये हमें मालूम है कि ये इसका कॉजल इफेक्ट क्या होगा। इस तरह के अच्छे क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे तो इससे हमको दुख नहीं होगा, सुखी महसूस होगा। तो हम कई बार इनकी ओर भी ध्यान नहीं देते और हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि किसी तरह से मेरे जो मैं का भाव है उसके साथ ही काम करते रहते हैं। और हमको लगता है कि ये तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन आप अगर विचार करें कि आज हमने किसी की हत्या नहीं की, कोई चोरी नहीं की, कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, कितने लोग हैं संसार में जो ये कह सकते हैं कि आज मैंने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह से अगर हम विचार करेंगे, विवेचना करेंगे, तो अपने जो अच्छे काम हैं, जो हमारे अच्छे एक्शंस हैं, समझेंगे कि हाँ, इस तरह से अगर हम जीवन जिएंगे तो हम ना खुद परेशान होंगे, ना दूसरों के लिए परेशानी करेंगे। तो इस तरह की जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं उनको कल्टिवेट करना भी एक दुख मुक्ति का कारण बनता है। इसी तरह से सजगता का, माइंडफुलनेस का डेवलप करना, समता का व्यवहार करना, एक कंपोजर बनाना, ये सब क्वालिटीज़ हैं जो कि हमको हमारे नोबल पाथ के अनुसार से हमारे दुख मुक्ति की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर हम एक कोई गोल बनाते हैं, मेरा ये गोल है, तो फिर उसमें मैं भी साथ ही चलता है, मैं वहाँ पहुँचूँगा गोल पे, तो उसके कारण दिक्कत हो जाती है। हमको जो कारण है और फिर उसका फल है उसको समझना चाहिए, कॉजल रूट को, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को ठीक से समझेंगे और कॉजेज़ को कल्टिवेट करेंगे तो अपने आप उसके रिजल्ट आ जाएंगे। अगर मैं कोई एक निर्धारित गोल बना दूंगा, चाहे वो नोबल ही हो, बहुत अच्छा ही गोल हो, उसमें मैं का भाव साथ चलेगा, तो दुख से मुक्ति सचमुच में नहीं हो पाती।
Foliage and death are the future. We've not seen that yet and experienced. Right now, what you call dukkha, what he says that I am not able to positive things in life. Things which are bringing happiness to me rather than seeing dukkha. Or you just wait for the time to come and call that a dukkha. What will make a person dukkha? He's living a happy life, living with family, parents, everything. Mm-hmm. What means dukkha to a person living a happy life? Sometimes you have to give up. I mean, sometimes just trying to explain it to people is really, it's really difficult, because but it's also, like if you try, and you just see this so often, because people, there's somehow a sense, if like the Buddha's teaching kind of challenges us as in the human condition, and I think particularly, say it's probably not just in this age, even in the Buddha's time, but to actually acknowledge the fact that one is not totally and completely happy, not completely satisfied, that there is some kind of suffering there, is somehow an acknowledgement of failure, and that's people can't go there. Most people can't go there, but the reality is, it doesn't matter how successful, how accomplished people look on the outside. It's just oftentimes just the mind it's the way the mind works, and the way that we conceive of ourselves and the world around us. It keeps us off balance, and keeps us kind of agitated. I mean, that's one of I like one of the nice translations into English of dukkha is dis-ease, in the sense that you're not completely easeful, not completely at ease with everything, and it's not something that you can convince people of, but I think it's something that it's one's own. You have to just sort of keep the focus on oneself, and then as people see one's own, say, well-being, ease, sense of clarity that one's living one's life, people are drawn to that, and even if it doesn't make sense on a rational level, I'm not me, I don't suffer. But it's still, there's something that is very tangible when one is experiencing somebody who is, you can see a change in them, and I think that's where, say, like especially in family life, or in families where like it was very sweet one time, speaking with Luang Por Sumedho's sister, and Luang Por Sumedho is a great teacher and elder in our community, but he's got family, and he's got an older sister who's actually, she's a very devout Christian, and but I remember sitting and talking with her one day and just saying, I said, oh yeah, I said, I saw years ago how much he changed, and that was really
He said he was a really unhappy, angry person, and he's really changed. So she was really inspired by that, and doesn't mean that she wants to be a Buddhist or anything, but that's a real acknowledgement of that change. And I think that certainly for us as monks, and especially as Western monks, where most of our families don't really have a clue what we're doing. But they see that we're, for the most part, happy or happier, and that is that's sort of tangible proof in that. आपने प्रश्न पूछा कि एक ले पर्सन जो अच्छी परिवार का है, उसको सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसने कोई ट्रेजेडी नहीं देखी, कोई बीमारी नहीं देखी, स्वास्थ्य है, तो उसको ये बात कि दुख है समझ में नहीं आती, और वो उसको लगता है कि दुख की चर्चा करने से अच्छा है कि मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में विचार करूं। तो किस तरह से उनको समझाया जा सकता है इस बारे में? तो लुंगपुर ने कहा कि दूसरों लोगों को समझाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, और क्योंकि भगवान की जो शिक्षा है वो सामान्य हमारी जो अवधारणाएं हैं उनको चैलेंज करती है, और ये बड़ा मुश्किल होता है कि आदमी एक्नॉलेज कर एक्सेप्ट करे कि वो भी पूरी तरह से सुखी नहीं है, पूरी तरह से ईज़ पे नहीं है, इज़ नॉट दैट कम्प्लीटली एट ईज़ एंड सेटिस्फाइड। कहीं ना कहीं अगर गहराई से देख पाएँ तो मालूम को पड़ता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंदर एजिटेशन होती रहती है, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल हो, कितना ही पहुंचा हुआ हो। तो लोग सामान्यतः उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो छोटी वो इतना हल्के लेवल पे रहता है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। पता नहीं चलता कि कब हमारा बैलेंस हट गया, उस सक्सेस में के अंदर ही किस तरह से बैलेंस हट जाता है, एजिटेशन हो जाती है, क्योंकि वो बहुत हल्के लेवल पे और अंदर रहती है, छिपी हुई रहती है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। तो सचमुच में जो दुख की बात भगवान कहते हैं उसका ट्रांसलेशन सफरिंग की जगह अगर हम करें नॉट एट ईज़, क्या कि डिस ईज़, कि हम शांत से नहीं हैं, एक पूरी तरह से वेलबींग का अनुभव नहीं होता, कहीं ना कहीं बीच बीच में उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। ये बात सत्य है कि दूसरों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, हम अपने पे ही फोकस करें, और जैसे हम इस मार्ग पे आगे बढ़ें और हम में चेंजेस आएंगे तो लोग अपने आप उस हमारी ओर आकर्षित होते हैं, और फिर वो आपसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है, किस कारण से ऐसा है। क्योंकि सामान्यतः अगर आप एक्सप्लेन करेंगे किसी को जिसका लाइफ बहुत सक्सेसफुल है, हैप्पी है, तो उसको ये बात समझ में नहीं आती है। और ये बात हर फैमिली में जब वो किसी एक फैमिली के सदस्य के अंदर कोई चेंज दिखता है, कोई बदलाव दिखता है, लगता है कि पहले से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, समता में रहता है, तो जाके बात समझ में आती है कि हाँ कुछ अच्छी बात हो ये कर रहे हैं, तो तब उनका रुझान बढ़ता है ये बात समझने के लिए। तो आप दृष्टांत दे रहे थे अजान सुमेधो की बहन का, जो उनसे बड़ी हैं, वो कहते हैं बहुत श्रद्धालु क्रिश्चियन हैं। वो बताते हैं कि कई बार उनसे मैं बात की थी एक बार, तो उनसे वो खुद ही एक्नॉलेज कर रही थी कि अजान सुमेधो में कितना बदलाव आ गया है। पहले वो बहुत एजिटेटेड और गुस्सा रहते थे, अब वह शांत रहते हैं। तो वो उनको देख के, अपने छोटे भाई को देख के बहुत इंस्पायर होती थी। तो इसी तरह से हर परिवार में जब कोई साधना ठीक से करता है तो उसके बदलाव के ही कारण उसकी ओर आकर्षित होते हैं, समझते हैं कि पहले से ज़्यादा प्रसन्न है। तो जो चीज़ दिखती है, एक टेंजिबल चीज़ दिखती है, तभी लोग अपने आप उस तरफ आकर्षित होते हैं। उनको केवल समझाने से ये बात समझ में नहीं आती, जो खास तौर पे जिसका जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, कोई ट्रेजेडी नहीं है, कोई भयंकर बीमारी नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति। Lumpur, recently a friend of mine became very critically ill, and when I got to know of this, it created a strange fear in me, a fear of loss. As I contemplated, the person is alive and will have a diminished quality of life.
So as I reflected, I realized that there's a strange fear inside me that I will have a part of me which used to experience this friend in a particular way will not have access to this person in the same way, which means that a part of me will have to die. And that created this, lot of restlessness inside me. So I have two questions. One, how can I use this experience and reflect on it for my evolution? And second, how can I help this friend by way of metta or whatever? Yeah, I mean, that's a very, very real experience, because it's one thing to do the chanting and sort of, oh yeah, I'm of the nature to age, I've not gone beyond age. I am of the nature to sicken, I've not gone beyond sickness. And I'm of the nature to die, I've not gone beyond dying. We chant it quite regularly every day, and we can accept it rationally. But then reality has a tendency of kind of hitting you in the gut, doesn't it? And that's really important to pay attention to. It's not to cover that over, not to wallow in it, but not to cover it over, because it's and that's similarly like when the morning chanting, when the Buddha is defining what dukkha is, that separation from the loved is dukkha. The association with the unwanted is dukkha, and for our friends to be ill or to experience some misfortune in some way, to die, that is separation from the loved, and it's very real, and you can't go through life without experiencing it. So that is again, this sense of the Buddha pushing us to acknowledge truth or reality, but also with the confidence that it's something that when we are willing to really allow that in and to allow it to transform us, what usually arises, I mean, one of course is a greater understanding, but what really arises also is greater compassion, and that ability to be present with somebody else who is suffering in some way, and to one is not to be fearful of it, because that's it pushes our buttons. And in that, it's something, that it pushes that fear button, and but then as we say contemplate it, work with it, and accept it, then there's a greater understanding and a greater kind of a realization. Yeah, I can't escape from this, and nobody escapes from this. But there's ways of dealing with it that are very wise and compassionate, and that's what one can bring to that situation. And I find that being of course as a monk, oftentimes we're asked to visit people who are ill, and of course I would say for me in particular, one of the big things was just Ajahn Chah, my own teacher, and separation from the loved in a major way, and seeing him, his health diminished, and then
it was going in only one direction and is passing away. So, but as we internalize that and work with that, then we're able to be with people. And I think and you don't have, oftentimes you don't have to say a whole lot. What's really important is being able to listen to people. So like when somebody who is ill or who is they're having major challenges, health challenges like that, or anything else, but to be able to listen is really, because that, usually what we want to do is we want to fix them somehow, right? And it's really the wrong time. That's the time to listen. When people feel that there is somebody who is willing to listen, willing to be with them, and isn't, because oftentimes that impulse to fix, or that impulse to console, so often comes from our own fear, and to be able to not buy into that, but be ready to really be with them, it's really appreciated, because people don't get that very often when they're in say health challenges or challenges in whatever, like dukkha that they're experiencing. So that being able to just to be present, and then often it's not that you can't say anything, but oftentimes what you do say is then it's appreciated, it's appropriate, but that the main thing is that willingness to be able to listen, and to be that they can there's a trust, a bond of trust that people oftentimes feel, and it's very supportive for them. And when it's just that, so for ourselves, really working with, well, what are the things that really bring fear up for me, and as we're willing to contemplate that, willing to work with that, then that just that non-buying into fear gives people a solid kind of support, and that's really appreciated. आपने प्रश्न पूछा कि अभी हाल ही में मेरा एक मित्र बहुत क्रिटिकली बीमार हो गया है, उसकी लाइफ की क्वालिटी भी काफ़ी कम हो गई है। तो उसको देख के मेरे मन में बहुत भय जागा कि जैसे जो भी मेरे उसके साथ अच्छे अनुभव थे, अब वो अनुभव नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा लगा जैसे मेरा एक ज़िंदगी का एक हिस्सा समाप्त हो रहा है, और इस कारण से काफ़ी बेचैनी हुई, बहुत परेशानी हुई। तो किस तरह से मैं इस अनुभव को अपने साधना के लिए, अपने इवोल्यूशन में इस्तेमाल कर सकती हूँ, और कैसे मैं अपने मित्र की मदद कर सकती हूँ, ये उनका प्रश्न था। तो लुंग पोर ने जवाब दिया कि ये बात हम जब सामान्यतः चैंटिंग करते हैं, जरा नती तोती, आई हैव नॉट गॉन बियॉन्ड ओल्ड एज, आई हैव नॉट गॉन बियॉन्ड सिकनेस, तो चैंटिंग में कोई हमको कहने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब सचमुच में जब होता है तो रियलिटी में आता है तो काफ़ी हमको कष्ट होता है, काफ़ी दुख का अनुभव होता है। तो उस समय सचमुच में हमारा टेस्टिंग होगी कि कितनी हमारी चैंटिंग में दम था, हम कितना उसको सिर्फ मुंह से बोल रहे थे कि अंदर से उसको ठीक से गट लेवल पे समझ रहे थे। तो आपने दो बात की। एक तो बात जब इस तरह की परेशानी आ रही है और भय जाग रहा है, बेचैनी हो रही है, तो उसको कवर करने की कोशिश ना करें, किसी तरह से छुपाने की कोशिश ना करें, ना ही उसमें वैल्यू करें, ना ही उसके अंदर अपने मन को लोट पलोट लगाने दें। ये बात समझें कि जो प्रिय हैं उनसे विछोह तो होना ही, जैसे हम चैंटिंग में भी करते हैं, प्रिय ही विप्रयोग दुखो, तो ये हमारे लिए एक अनुभव है उस बात का कि मित्र हैं हमारे तो बीमार भी पड़ेंगे, कोई मिसफॉर्चून हो जाती है, कोई मर भी जाता है। तो जीवन में ये सब अनुभव तो होने ही वाले हैं, इसके बगैर तो हम नहीं रहेंगे।
तो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा का मुख्य बात है कि हमको सत्य को मानना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो रियलिटी है, और एक विश्वास है, एक कॉन्फिडेंस है कि जब हम उसको सत्य को मानते हैं, उसको समझते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उससे कई लाभ होते हैं। एक ये कि हमारी करुणा का भाव बढ़ता है, कंपैशन बढ़ता है, और फिर हम कोई जो बीमार है, जो परेशानी में है, तो हम उसके साथ बैठ सकते हैं बगैर भय जगाए। तो हमें भय नहीं जगेगा, हम उसके साथ बैठ के करुणा के साथ बैठ सकते हैं और एक अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और तो एबिलिटी है कि जैसे हमारा कंपैशन बढ़ता है, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बैठे हुए हैं, उस कंपैशन के कारण, उस करुणा से कारण किस तरह से परिस्थिति को हम डील करते हैं वो भी हमारे में समझ आ जाती है। लेकिन अगर भय किस कारण रहेगा तो वो समझ नहीं आती। तो जो भंते जी बता रहे थे कि वो खुद भी कई बार एज ए मॉन्क्स को, जो लोग बहुत बीमार होते हैं या मरणासन होते हैं, उनके पास जाना पड़ता है, और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अनुभव होता है। आपने बताया कि मेरे जो आचार्य थे, आपके जो सबके श्रद्धेय हैं आजान चाह साहब, जब वो बीमार हुए तो उन्होंने उनको देखा कि वो किस तरह हेल्दी स्टेट में थे और धीरे धीरे कैसे उनका शरीर जो है बीमार होता चला गया और वो बिल्कुल निष्प्राय, हिलजुल भी नहीं पाते थे। तो उससे कितना परिस्थिति, कितनी उनको समझने की एक परिस्थिति क्रिएट हुई, उसके बारे में आप बता रहे थे। और जब कोई इतना बीमार है तो जाके सामान्यतः हम जाते हैं तो उनको कंसोल करने की कोशिश करते हैं या उनको कंडीशन को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी जो मरणासन स्थिति है, बहुत क्रिटिकली बीमार है, वहाँ पे मुख्य बात यह है कि कोई आदमी अगर उनका मित्र है, उनके पास जाके जस्ट उनके साथ बैठे और उनके दुख दर्द को शेयर करे, उनकी बात सुने। तो जो कंपैशनेट लिसनिंग की बात भंते जी कह रहे थे कि वो अगर हम कर पाएंगे तो वो सच बहुत मदद करता है उस बीमार के लिए। और उस कंपैशनेट लिसनिंग से जो चीज़ें एमर्ज होती हैं अपने आप, ऐसा नहीं कि कोई एक्शन कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उस आधार पे जो एक्शन एमर्ज होगा वो अप्रोप्रिएट होगा और उससे हमारा भी दुख नहीं बढ़ेगा और दूसरे का भी दुख नहीं बढ़ेगा। तो हमको इस तरह से कंटेम्पलेट करना चाहिए इन बातों के ऊपर कि किस कारण से हमारे में भय जागता है, और फिर देखें कि उसका इस परिस्थिति से क्या रिलेशनशिप है। क्यों Hello. There you go. Sir, there is this question online from Ms. Shweta. What are some of the practical ways in which one could nurture the practice of mindfulness as a homemaker who has limited or no access to formal institutions for meditation? Could you repeat that, please? What are some of the practical ways in which one could nurture the practice of mindfulness as a homemaker who has limited or no access to formal institutions for meditation? Okay. Well, one of them is the internet. Just like that, being able to ask the question online and actually following. Obviously, this is being webcast, so I think they're already doing it. And but so I think a lot of it is finding community in some way, and that there are. I mean that is the beauty of I mean, the internet can be a real tangle of confusion and distraction,
but it's also can be an incredible tool. So that being able to access and through the internet, there's Dhamma talks, there's discussion groups, and so finding like-minded people that one finds supportive. I think that's an important way of being able to support oneself. That whole sense of the whole word that the Buddha uses of kalyanamitta, of spiritual friendship. I mean, obviously, a personal connection with a teacher or a place is very very important. But it's also the reality of the world today is that it's not always accessible, and so that finding that spiritual friendships in the ways that one can, and certainly through accessing particular Buddhist groups, meditation groups that are making and teachers that are making teachings available. Different publications that are available. Certainly the Ajahn Chah tradition has put a lot of effort into printing books. A very archaic concept, having paper books. There's a kind of connection there, and you've got something tangible, something physical, and then of course so many of the teachers, not just in our tradition, but just everywhere. I mean, the Dhamma talks, YouTube is it's a mine of cat videos and whatnot. But I mean, it's also a tremendous amount of Dhamma teachings available, and so that sense of paying attention to how to cultivate kalyanamitta, how to draw close to people who are sincere in Dhamma, and of course I think also what is important is having a physical place, which you're doing right here. I think that's a really important contribution to people. And again, it's not just in the people who make the effort to come here and plug in and contribute to the practice and the development of this center, but you start recognize that there's other people that are affected by it, or drawn in by it, as evidenced by the question today. It's just somebody is accessing this session through the web, and that's so. But having a physical place, having a physical center, having activities that people can join in with, that's a huge support, not for just you as a group, but for so many people that it extends to. So quite important to nurture that. And it's also, I think one of the things is to also viewing it in terms of whether you're close or you're distant. Oftentimes how we tend to think is, what can I get from that, or how can I receive something that they're doing? But it's also, I think it's important,
what can I give to them? How can I help? And whether one's close or one's far away, there's many ways that one can be helping and being giving as well. दीपक जी ने प्रश्न पूछा जो उनके पास जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे हम लोग करते हैं वहाँ से प्रश्न आया था एक साधिका का कि एक गृहस्थ के लिए जो कि नारी जो घर में अपने बिजी है घर उसके लिए क्या प्रैक्टिकल तरीके हो सकते हैं जिससे कि साधना को बढ़ाया जा सके, सजगता को, माइंडफुलनेस को, सती को प्रतिष्ठित किया जा सके, जिसके पास इतनी सुविधा नहीं है कि किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेट कर पाए। तो बनते जी ने जवाब दिया कि ये जो प्रश्न इंटरनेट से आया तो वही एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ को लाइव फॉलो कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और एक कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। इंटरनेट कई बार तो एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बनता है, समय बर्बाद होता है, लेकिन एक बहुत अच्छा टूल भी है अगर उसको ठीक से इस्तेमाल किया जा सके। उस पर कई धम्मा टॉक्स हैं, प्रवचन उपलब्ध हैं, डिस्कशन ग्रुप्स हैं और आप उस तरह से जो आपके जैसे राइट माइंडेड पीपल हैं जो कि उसी तरह से सोचते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और भगवान ने भी हमें बताया कि एक स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, कल्याण मित्र का रोल बताया कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये बात भी है कि एक पर्सनल कनेक्शन हो किसी के साथ तो बहुत अच्छा रहता है, बट कई बार ये भी सत्य है कि डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता, तो उसके लिए और तरीके हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं उस तरह के ग्रुप से रिलेट करने के। और जो टीचर्स हैं, कई लोग टीचिंग अवेलेबल रखते हैं नेट के माध्यम से, तो ये और हमारा जो अजान चा का ट्रेडिशन उन्होंने भी बहुत एफर्ट किया है कई सारी पुस्तकें छापने में, धम्मा टॉक्स हैं उसमें, तो वो सब यूट्यूब पे हैं, उनको भी देखने से एक कनेक्शन बनता है। और इस तरह से एक तरह से मैं भी इन लोगों के साथ जुड़ूं और एक कोई फिज़िकल स्पेस होना, एक जगह होना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने यहाँ पर जगह बनाई हुई है तो उसके साथ जुड़ना भी एक बहुत महत्वपूर्ण का तरीका हो सकता है कि हम यहाँ आएँ समय निकाल के और यहाँ पे लाभ लें इस पर जो व्यवस्था अवेलेबल है, जो सिचुएशन है। और ये भी बात भी मिलने से सब जब साथ बैठते हैं तो ये बात भी समझ में आती है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे जैसा ही सोचते हैं, तो उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, नेट के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन फिज़िकल कनेक्शन भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी जगह पे प्रॉपरली हम पीरियडिकली एक्टिविटीज़ करते रहें जिससे कि लोग आएँ, मिलें और समझें, एक संघ बनाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तरीका तो यही है कि ऐसी जगह से मैं, एक विचार ये हो सकता है कि मुझे इससे क्या लाभ होगा, दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं किस तरह से इस संस्था को, इस व्यवस्था को जो है उसमें सहयोग करूं, उनसे भी एक हमारी कुशल प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इस तरह से कई तरीका हैं जिस तरह से हम एक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। Sir, there is one more question online. Can one meditate with chanting in the background? If yes, where can I find these chantings? Yeah, certainly. I mean, chanting can be very soothing, and especially if it's familiar, like especially, I mean, there's chanting and there's chanting, because sometimes chanting can be pretty spectacular and very stimulating, but that's that I wouldn't encourage that, and certainly our chanting is not very stimulating, but it's very soothing when you allow that rhythm to help to settle, and so that and I don't know what say. Certainly
I know my own monastery, Abhayagiri, all of our chants are online. The chanting is there, and I don't know, Wat Nanachat. Yeah, so Wat Nanachat is the chanting is online. Most it's out there, and it's using, and there's some a lot of it's just exploring what's available. But I would encourage some kind of chanting that's fairly that's on a certain level monotonous. Not in terms of like boring you to tears, but not too stimulating. And because really, some, especially with meditating, the mind is looking for some kind of escape anyway. It's like on a certain level, you think, one in breath and one out breath. I mean, how boring is that? So that the mind is just waiting for something to escape into. But it's also, but there's a point to that, in the sense of when you become mindful of the ordinary, then the quality of mindfulness starts to become strong and settled, as opposed to like the mind that goes out to sense objects is always looking for something a little bit more interesting, a little bit more stimulating, and that kind of distraction, even if it's innocent, it can be an obstacle. That being said, as I said, there's sometimes it's helpful to have something that is a support for the settling, because meditation's not always easy, and you've got to find ways to encourage yourself and support yourself that are useful and beneficial and keep you on track in a Dhamma sense. एक और प्रश्न जो ऑनलाइन आया था, उन्होंने बताया कि क्या हम ध्यान करते हुए कोई ऑनलाइन चैंटिंग हो उसको सुन सकते हैं। पंत जी ने कहा हाँ, चैंटिंग जो है काफ़ी सूदिंग हो सकती है, और अगर फैमिलियर हो, उसको हम समझते हो तो, बट चैंटिंग कई बार बहुत उससे उत्तेजना भी पैदा हो सकती है, बहुत स्पेक्टेकुलर हो सकती है, इट कैन स्टिमुलेट। जैसे बताते हैं कि ऑनलाइन कैसे हैं, जैसे अभयगिरी मोनास्ट्री जो है जहाँ के अबॉट लोग रहे हैं, वहाँ पे सारी चैंटिंग्स ऑनलाइन हैं। आपने पूछा वाट पा नानाचात की भी चैंटिंग्स हैं, और इंटरनेट पे तो बहुत सारी चैंटिंग्स अवेलेबल हैं। लेकिन चैंटिंग सूदिंग तो हो, लेकिन वो उत्तेजना ना पैदा करें, स्टिमुलेटिंग ना हो, क्योंकि ख़ास तौर पे जब हम ध्यान कर रहे हों। क्यों? उसके लिए बंते जी ने बताया कि हमारा मन जो है सामान्यतः किसी तरह से एस्केप करना चाहता है ऑर्डिनरी चीज़ों से, और एक सांस आ रहा है, एक सांस जा रहा है, इसको देखना तो सचमुच में बोरिंग होता है, और लेकिन मन वेट करता रहता है किस तरह से इससे छुटकारा मिले। लेकिन जब हम सामान्य चीज़ों की तरफ सजगता बढ़ाते हैं, व्हेन योर माइंड ऑर्डिनरी, तो सचमुच में हमारी सती प्रतिष्ठित होती है, हमारी सजगता बढ़ती है। मन की जो टेंडेंसी है कि जो इंद्रियों के ऊपर स्टिमुलस आए, कोई बाहर से इंद्रियों का स्पर्श हो और उस स्टिमुलेशन से हमको इंटरेस्ट जगता है, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन ही होगा साधना में, और उस डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। हाँ, कभी अगर साधना बिल्कुल छूट रही है, बिल्कुल परेशानी हो रही है, तो उस एक सपोर्ट के लिए, एक टेम्परेरी सपोर्ट के लिए
अपने आप को इनकरेज करने के लिए चैंटिंग सुन सकते हैं, लेकिन सामान्यतः बंदे जी का सुझाव है कि साधना करते समय चैंटिंग कई बार, खास तौर पे अगर वो ज़्यादा स्टिमुलेटिंग है तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, साधना में बाधक हो सकता है। Okay.